So question number 20. So here we are given that prove that prove that the right circular cylinder of given surface area मैंने आपको बोला था क्या गिवन है वो आपको पहले नोट डाउन करना है. So given so that right circular cylinder of given surface area, so surface area is given. Lateral surface area, total surface area is not mentioned, so you have to consider total surface area. So given right circular cylinder, so given right circular cylinder, so this is cylinder. This is given right circular cylinder. You have to maximize the volume such that its height is equal to diameter of the base. This is height of cylinder h and radius is r. So you have to maximize the volume of the cylinder pi r square h such that its height is equal to diameter. So it's a twice of radius. That means for this given condition h equal to 2r, you have to prove that its volume is maximum and given that surface area. है ना? Why you have to consider this given condition? So by using this given condition, we are converting our two variable equation into one variable equation, and then we can differentiate the given function. Done? So what is the requirement of this maximization? है ना? आपको कुछ ऐसा तो होगा सर ये सब क्यों मैक्सिमाइज कर रहे हैं? So here you have to maximize the volume. Surface area is fixed. That means what is the surface area? Surface area is nothing but the material which is used to make this cylinder. ये सिलेंडर बनाने के लिए जो मटेरियल यूज जो हमें प्रोवाइड करना है, that material is limited. So by using that limited material, fixed material, you have to maximize the volume. आपको एक ऐसा सिलेंडर डिजाइन करना है जिसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज हो. दैट मीन्स इसके अंदर हम जो भी कुछ चीजें भरना चाहे वो हम मैक्सिमम कंटेंट में उसको अंदर भर सके. है ना? आप इसको सिलेंडर को आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसा लंबा चौड़ा. है ना? कैसे बनाओ? ऐसे ऐसे लंबा होगा तो इसकी कोई मीनिंग नहीं है, इसके अंदर वॉल्यूम कम हो जाएगा. तो आपको एक ऐसा सिलेंडर डिजाइन करना है जिसका वॉल्यूम है वो मैक्सिमम हो और उसका जो सरफेस एरिया है वो फिक्स हो. डन. सो देर इज द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ द मैक्सिमाइजेशन. So here you have to maximize the volume for the given condition. Height is equal to the diameter of given cylinder and the surface area is fixed. So let's fixed surface area of the cylinder is lateral surface area plus top plus bottom. Lateral surface area is 2 pi rh and top is pi r square, bottom is pi r square. So it's a 2 pi r square. So it's a 2 pi r square plus 2 pi rh. This is given. This is fixed. Volume V. Volume V is equal to pi r square h. So now we start with the given function that we have to maximize. We have to maximize the volume. So volume V equal to pi r square h. So here volume is the function of two variable r and h. So first we have to convert this two variable problem into one variable problem. So for that we are using given condition. So given condition is s. So now from this s we have to write this h. तो उसके लिए ये जो 2 पाई आर स्क्वायर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो इट विल बी एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर और उसके बाद 2 पाई आर से डिवाइड करेंगे. सो 2 पाई आर से डिवाइड करेंगे. सो दैट इज द वैल्यू ऑफ एच. सो नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ एच in this equation. So we are getting volume V equal to pi r square into h. H is s minus 2 pi r square upon 2 pi r. Done. Perform expansion. So it is now the function of only one variable r. So it's s pi r square upon 2 pi r. S pi r square upon 2 pi r minus 2 pi square r square. 2 pi square r raised to 4. 2 pi square r raised to 4 divided by
2 pi r, कटिंग करो तो क्या होगा, पाई पाई कट, r is cut, it's a s r by 2, s into r by 2. Here 2 2 cut, 1 pi is cut, and 1 r will be cut, so it's a r cube. So it's a 2 pi, or we can say 2 to cut pi r cube minus pi r cube. So this is the volume in terms of only radius. Volume in terms of only radius. Now for the maximization, we have to differentiate it. So first order derivative of this SR by 2 minus pi r cube is क्या होगा with respect to r. So s by r है ना, differentiation of r with respect to r is 1. So it's s by r minus 3 pi r square. So it's our dv by dr. So now dv by dr. So dv by dr, dv by dr is s by 2 minus 3 pi r square. Now for the critical point, we have to consider first order derivative equal to 0. So dv by dr equal to 0. So s by 2 minus cr square equal to 0. So from this we are getting the value of r. So it's 3 pi r square equal to s by r. 3 pi r square equal to s by 2 है 2, s by 2. So r square equal to, our r square equal to s upon 6 pi, s upon 6 pi. So here value of r is s upon 6 pi square root of s upon 6 pi. Done. This is a critical point. Now for the maximization, we have to check whether this critical point is point of maxima or minima. It must be a point of maxima. So for that we have to obtain second order derivative. So d square v upon dr square, second order derivative of this one, s by 2, s surface area fixed, है ना, fixed surface area is fixed, it's a constant. So s by 2 is the constant term. So differentiation of this first term s by 2 will be 0. Now it's a minus 3 pi r square. So minus 3 pi common, r square differentiation 2r. So it will be minus 6 pi r, second order derivative. Now you have to check the sign of the second order derivative at r equal to square root of 5 upon 6 pi. So d square v upon dr square at r equal to square root of 5 by 6 pi is equal to minus 6 pi into r root s upon 6 pi. So negative quantity less than 0. So we can say that our r equal to square root of s upon 6 pi is point of maxima. It's a point of maxima. Done. So point of maxima, we are getting the maximum value of the volume. So what is the maximum value of the volume? So for that we are getting the maximum value, and we have to prove that its height is equal to twice of the radius, or height is equal to diameter. So for this value of r, we are getting the maximum value of the volume, and condition that we have to derive that r equal to 2s. So for that we are putting the value of r in our s. Fixed surface area is there. So surface area is 2 pi r square plus 2 pi rh. So put s equal to, here from here we can write s equal to 6 pi r square, s equal to 6 pi r square. Use this value of s, है ना, यहाँ पर आया था r square equal to s upon 6 pi. So take s equal to 6 pi r square over here. So it's a 6 pi r square equal to 2 pi r square plus 2 pi rh. So that is equal to 4 pi r square upon 2 pi rh equal to h. 6 pi r square minus 2 pi r square. So it's a 4 pi r square divided by 2 pi r equal to h.
So pi cut 1 r is cut 2 cut 2 into r. So here we are getting h equal to 2r. So h is nothing but the diameter. So when h is equal to diameter, height of the cylinder is equal to diameter, we are getting the maximum value of the volume. Volume is maximized. Clear, students? So this you have to prove. So this is your question number 20. Now, question number 21. So for question number 21, we are given that of all the closed cylindrical cans, right circular cans are there of a given volume 100 cubic centimeters. Find the dimensions of the can which has minimum surface area. Done. So closed cylindrical cans are there, and what that cans volume is given. Given volume. है ना, इसको skip करें, एक पेज पूरा ले लें. So 21. So here we are given volume of cylindrical can. Right circular cylinder is there. So volume is given. Volume is 1000 centimeter cube. Volume is given. Find the dimension of the can which has a minimum surface area. And a volume is fixed. You have to design one can whose surface area is minimum. Surface area, that means the material which is used to make the can is minimum. तो मिनिमम सरफेस एरिया का यूज करके आपको ये जो वॉल्यूम है वो अचीव करना है. तो ऐसा एक आपको सिलेंडर डिजाइन करना है. Done. So the dimension of cylinder nothing but the height and radius of the base, or we can say base radius of the top. The dimension you have to find, h and r. So question is find the dimensions of the can which has minimum surface area. That means you have to find the value of height and radius of this cylinder for which volume is fixed. Volume is 1000 centimeter cube. Done. So now minimize. What you have to minimize? You have to minimize surface area. Minimize the for which the minimum surface area. So you have to minimize the surface area. So surface area of the cylinder is again हमने जो लिया था वही 2 pi r square plus 2 pi rh. Given volume is 1000 centimeter cube, and volume of cylinder. What is the volume of cylinder? It's a pi r square h. Volume of cylinder is pi r square h, and you have to minimize this one. So by minimizing this surface area, you have to find the value of h and r. Okay. So for the minimization of this surface area, first we have to convert this two variable function into one variable function, because surface area equal to 2 pi r square plus 2 pi rh. Radius and height both are there. So first we are finding the value of this h from the given condition. So volume is given 1000 centimeter cube, that is equal to pi r square h. So from this equation we can put h equal to 100 cube hai. So we can put h equal to 100, h equal to 100 upon pi r square. Done. So now our surface area S equal to 2 pi r square plus 2 pi rh. Now for this h we are using given condition v equal to 100 cube equal to pi r square h. So from here we are getting value of h which is 100 upon pi r square. है ना. गिवन कंडीशन को हम कहाँ पर यूज करते हैं? हमारे टू वेरिएबल फंक्शन है वो टू वेरिएबल फंक्शन को वन वेरिएबल फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए. ये टू वेरिएबल फंक्शन वन वेरिएबल फंक्शन में कन्वर्ट क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पर हमें डेरिवेटिव करना है. सो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल हमें पता है ना. डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टू वेरिएबल वो हम इंजीनियरिंग में स्टडी करेंगे, तो अभी वो नहीं करना है. सो रिप्लेस दिस एच विथ दिस 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर.
So S equal to 2 pi r square plus 2 pi r into h 100 upon pi r square. क्या होगा ये? Pi cut. So it's a S equal to 2 pi r square plus 200 r और ये एक r भी गया 200 upon r 200 upon r. Done. So this is our S. Now it is converted into one variable problem. 200 upon r plus 2 pi r square. Done. Now for the maximization we have to consider first order derivative. So differentiate this surface area with respect to r. So now ds by dr, 2 pi constant, differentiation of r square will be 2r, so it's a 4 pi r, 4 pi r plus 200 constant, differentiation of 1 upon r is minus 1 by r square, so it's a minus 200 by r square. Done. And for the maximization we have to consider this derivative equal to 0, so take ds by dr equal to 0. We are getting the value of r. So 4 pi r minus 200 upon r square equal to 0. So it's a 4 pi r minus 200 upon r square equal to 0. Simplify this. So it's a 4 pi r cube minus 200 whole divided by r square equal to 0. So it's a 4 pi r cube minus 200 whole divided by r square multiplies with 0. So it's a 0. So we are getting 4 pi r cube equal to 200. R cube divided by, sorry, r cube equal to 200 divided by 4 pi. 4 5 is 50 by pi. So r equal to, r cube equal to लिखो पहले 50 upon pi. So value of r is 50 by pi cube root. So it's a 1 by 3. So radius r equal to 50 by pi 1 by 3. Done. So this is our critical point. So now after finding critical point, what you have to find? Whether it is point of maxima or point of minima. So for that we have to obtain second order derivative. So now second order derivative, it's a ds by dr. So d square s by dr square, d square s by dr square equal to क्या होगा इसका 4 pi constant, differentiation of r is r, sorry, differentiation of r is 1, so it's a 4 pi minus 200 constant और differentiation of r square is, है ना, r square ऊपर जाएगा तो r minus 2, so होगा minus 2 r raised to minus 3, so it's a minus 2 upon r cube. तो माइनस 2 ये 200 से मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 400. So it will be 400 by r cube. That is our second order derivative. Now for the second order derivative, check the sign of the second order derivative at r equal to 50 upon pi raised to 1 by 3. So d square s upon dr square at r equal to 50 upon pi raised to 1 by 3 equal to 4 pi minus 400 upon r cube. ये r 50 by pi raised to 1 by 3 और इसका क्यूब, तो ये 50 by pi होगा. So 50 by pi means pi ऊपर, ये कट 4 pi, ये तो जीरो आ गया, है ना. तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा फेल हो रहा है, तो अभी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक नहीं करेंगे, ठीक है. लेकिन ये जो आर की वैल्यू आई उसको डायरेक्ट इसके कंसिडर कर देते हैं. तो दैट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा सपोज. तो फिर ये आर की वैल्यू पर हम क्या कर रहे हैं, अभी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं. सो पुट द वैल्यू ऑफ दिस आर in our h. Where is our h? Question is find the dimension of this cylinder.
सो आर तो हमारे पास है और एच यहाँ पर है. पुट दिस वैल्यू ऑफ आर इन द वैल्यू ऑफ एच. सो एच इज 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, है ना. वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फेल हो गया, वहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करके आप चेक कर लेना, वो आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही मिलेगा. अभी वो नहीं चेक करना है, टाइम नहीं है. सो हियर वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एच. सो एच इज 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर है, और यहाँ पर हमें पुट करना है आर इक्वल टू रेडियस क्या डिराइव किया था हमने, 50 बाई पाई ऐसा कुछ था, 50 बाई पाई, 50 बाई पाई रेस टू 1/3, 50 बाई 50 upon pi raised to 1/3. Put this value of r here, so we are getting the value of h. So h equal to 100 pi 50 by pi raised to 1/3 उसका square, so it's a 50 upon pi raised to 2/3. अब इसको सिंप्लीफाई करना है. So h equal to 100. So this can be written as pi into 50 raised to 2/3 upon pi raised to 2/3, है ना. पावर को सेपरेट कर दिया. So this is pi raised to 1 and this is upon pi raised to 2/3. So 1 minus 2/3. So it's a pi raised to 1/3. So this is nothing but the 100 upon, this is pi raised to 1/3, and this will be 50 raised to 2/3. 50 raised to 2/3. Again simplification. This 100 can be written as 2 into 50. 2 into 50. So 50 raised to 1, and here it's a pi raised to 1/3 into 50 raised to 2/3. So again this power will be subtracted from this 50, so it's a 50 raised to 1/3. So it's a 2 into 50 raised to 2 into 50 raised to 1/3 upon pi raised to 1/3. So we can write our h as a 2 into pi upon 50 raised to 1/3. So this is the value of the height of the cylinder, and radius r equal to 50 upon pi raised to 1/3, है ना. वैसे भी हमने प्रूव किया था हाइट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द रेडियस पिछले सम में. सो अगेन दिस h इक्वल टू ट्वाइस ऑफ r. फॉर दिस maximum volume can be there and minimum surface area for the cylinder is there. Clear students? So this is how you can solve your question number 21. Now 22. 22 भी ऐसा ही है, बड़े बड़े कैलकुलेशन है. आज देखो 22 को पहले समझना पड़ेगा. What we are given in 22. So for question number 22, a wire is given. A wire of length 28 meter is to be cut into two pieces. So one wire is there. Suppose this is wire. A wire is there of length 28 meter. So this is the wire of length 28 meter. Now this wire is to be cut into two pieces. वायर को टू पीसेस में कट करना है. सो यहाँ से कट करते हैं. सो वायर इज कट इनटू टू पीसेस. वन ऑफ द पीसेस इज टू बी मेड इनटू स्क्वायर एंड द अदर इज इनटू सर्कल, है ना. ये पूरा वायर है. द लेंथ ऑफ दिस entire length of this wire is 28 meter. Now this wire is to be cut into two pieces. तो बीच में से कट कर देते हैं. Now the one piece of the wire is used into the square and another is used to into circle. तो यहाँ से बीच में से कट कर दिया, है ना. तो let's assume that this length of wire is x, है ना. x मीटर से कट कर दिया. So remaining wire having the length of 28 minus x meter. So total length of wire is 28 meter. So पूरा एक वायर है, उसको यहाँ से बीच में से कट कर दिया. तो जो फर्स्ट पीस है ना, फ्रॉम हियर टू हियर, उसका हमें क्या करना है, एक स्क्वायर बनाना है. तो देखो हमने एक स्क्वायर बना दिया. स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल. तो पूरी लेंथ x है, तो इसमें से हम एक स्क्वायर बनाएंगे. तो टोटल 4 पार्ट में डिवाइड होगा.
तो इस स्क्वायर की लेंथ होगी x/4, x/4, x/4 और x/4, टोटल मिला के उसका x होगा। बाकी जो बचा वो है 28 माइनस एक्स मीटर का वायर। उसमें से हमें क्या करना है, वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू स्क्वायर एंड अदर इनटू सर्कल। तो दूसरा जो पीस है उसमें से हमें सर्कल बनाना है। तो ये हमने सर्कल बना दिया, सर्कल विथ रेडियस r। डन। तो ये पूरी लेंथ ये सर्कल में गई, दैट मीन्स ये उसका सर्कम्फ्रेंस हुआ, सर्कम्फ्रेंस। सो सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस r इज 2πr। और ये जो लेंथ है वो कितनी है टोटल, क्योंकि दूसरा जो पीस है वायर का वो, उसकी लेंथ टोटल कितनी है 28 माइनस एक्स, इट्स 28 माइनस एक्स। So circumference of circle is equal to the length of the second piece of this wire. Circumference of circle with radius r is 2 pi r. The length of wire is 28 minus x. So here we are getting the value of this r. So r equal to radius of circle r equal to 28 minus x divided by 2 pi. 28 minus x divided by 2 pi. This is the radius of circle, and here the length of the one side of this square is x/4। क्लियर नाउ डेटा। एक पूरा वायर दो पार्ट में डिवाइड करना है, फर्स्ट पार्ट स्क्वायर बनाना है, दूसरा पार्ट सर्कल बनाना है। उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, x एंड 28 माइनस एक्स। तो x था उसमें से हमने एक सर्कल स्क्वायर बना दिया, और जो दूसरा जो लेंथ है 28 माइनस एक्स उसको हमने सर्कमफ्रेंस में यूज किया, सर्कल बनाया, तो हमें r की वैल्यू मिलेगी। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस सो दैट, ये जो हमने कट किया ना बीच में से, तो इसकी ये जो बीच में से कहीं से भी कट नहीं करना है आपको, ये जो बीच में से कट के ऐसे कट करना है, सो दैट you have to cut this wire into two pieces so that the combined area of the square and circle is minimum. That means combined area of the square and circle is minimum. ये जो सर्कल और जो स्क्वायर बन रहे हैं दोनों का जो combined एरिया है, that area must be minimum. So here you have to minimize the area. You have to minimize the area, combined area of square and circle. So area of this square will be side square. So it's a x/4 whole square plus, हे भगवान, area of circle pi r square. So it's a pi r square 28 minus x upon 2 pi r square ना, ये पूरी r थी, so pi r square. So this is the combined area of this square and circle. You have to minimize this area. Thank God this given area is the function of only one variable x. तो यहाँ पर हमें कुछ कन्वर्जन जैसी कुछ बात नहीं करनी है, डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट करके मिनिमाइज कर देना है। डन। वी हैव टू मिनिमाइज दिस एरिया। सिंप्लीफाई करें, क्या होगा सिंप्लीफिकेशन, इसको एक्सपांशन करें। सो दिस इज a इक्वल टू x/4 होल स्क्वायर, इट्स x² / 16 प्लस पाई, ये 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर है, 2 पाई होल स्क्वायर है, तो 2 पाई स्क्वायर करके बाहर ले ले तो होगा 4 पाई स्क्वायर। तो इट्स पाई अपॉन 4 पाई स्क्वायर, पाई अपॉन 4 पाई स्क्वायर, इट्स 1 अपॉन 4 पाई, पाई कट, और ये हो गया 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो उसको ऐसे लिखेंगे 28 स्क्वायर है ना, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर, सो प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर माइनस 56x है ना, बाइनोमियल का एक्सपांशन। तो वो कर दिया हमने, 28 स्क्वायर कुछ भी नहीं करना हमें, उसके ऐसे रखना है। सो दिस इज आवर एरिया। अभी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे है ना नेक्स्ट पेज पर। सो डिफ्रेंशिएशन, तो क्या होगा डिफ्रेंशिएशन एरिया का, देखो तो। सो a इक्वल टू x² / 16 प्लस 1 अपॉन 4 पाई 28 whole square plus x² minus 56x. So differentiation of a with respect to x. So now differentiation of a with respect to x, it's a dA by dx. So differentiation of this x² will be 2x by 16. So it's x by 8. X by 8 plus this is 1 upon 4 pi. 1 upon 4 pi common. ना constant बाहर ले लिया.
1 upon 4 pi. Now in the bracket, differentiation of this 28 square constant 0. This will be 2x minus 56. 2x minus 56. Now here we can take 2 common. So it will be x by 8 plus 2 common लेंगे तो ये होगा 1 upon 2 pi. So it's a 1 upon 2 pi. This is x minus 28. X minus 28. X minus 28. This is our dA by dx. First order derivative of area. Now to find critical point, take this one equal to 0 and find the value of x. So again to find the value of x, we have to perform expansion over here. So this is equal to x by 8 plus this is x upon 2 pi, x upon 2 pi minus 14 by pi, 14 by pi equal to 0. Now here we can take x common. So x common, this is 1 by 8 plus 1 upon 2 pi. This is equal to, taking this minus 14 by pi on the right hand side, it's a 14 by pi. Simplify this, it's a x 2 pi plus 8, 2 pi plus 8 upon 16 pi equal to 14 upon pi. Cross multiply करो, so we are getting x equal to 14 upon pi multiply by 16 pi, and here 2 common, so it's a pi plus 4. So this pi cut, 2 8s are 16, so x equal to 14 8s are 112 upon pi plus 4. So this is the value of x, है ना. Critical point क्या आया हमारा critical point. We have to minimize it, so you have to prove that this critical point is point of minima. अगर हो सकता है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करके चेक कर दे, नहीं होगा तो आपको खुद से कर देना है. तो डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज एक्स बाई 8. क्या होगा 1 by 8 plus 1 upon 2 pi differentiation of x 1 minus 28 0. तो ये तो greater than 0 आ गया है, so it is greater than 0. So for this any value of this x, क्योंकि यहाँ पर तो x है ही नहीं, so for any value of x, our x equal to 112 pi plus 4 is point of minima. This is the point of minima. So for this value of x, we are getting the minimum value of the area. So we have to minimize the area. Done. So this is the x. What is x? x तो हमने एक पीस लिया था वो था, तो एक तो मिल गया, उसके लिए हमें मिनिमम एरिया भी मिल रहा है ना, क्योंकि ये वैल्यू के लिए हमें एरिया मिनिमम मिलेगा. तो दूसरी लाइन फाइंड करनी है, which is 28 minus x. So now the length of another piece, length of another piece of wire, which is x minus 28 minus x, 28 minus x. So this is equal to 28 minus x 112 divided by pi plus 4. Simplify करें, क्रॉस मल्टीप्लाई 28 pi plus 28 4 जा 4 8 जा 32, 2 2 जा 8 11, 112 minus 112 divided by pi plus 4, ये भी कट. So length of another piece, length of another piece of wire is 28 pi upon pi plus 4. So in short, you have to divide your wire into two pieces. The length of one piece will be 112 upon pi plus 4. Unit क्या था हमारा, सेंटीमीटर, मीटर. So it will be meter. 112 upon pi plus 4 meter, and piece of another wire having the length of 28 pi upon pi plus 4 meter. Then and then the area of circle and square will be
minimize.